Assalamu alaikum everyone, this is me Muhammad Hasnain again with another video. There was once a era of barbaricness and viciousness where no one really understood love. Not just the concept of love, but rather the word love. No one even knew what the word love even meant in the first place. Love was a foreign concept to them. This is the story of one of my favorite and most, I would say, beloved stories. To all of the people on Instagram that have asked me if I watch anime, so that is correct. I do watch anime and I do have a life. I'm not just a machine. I do watch anime. For the first time in life, I had seen the many different people's recommendation for this specific series. For the first time in life, I watched it during Ramadan. It was one of the most beautiful and most spiritually connecting series I had watched in a long time. Even though the series is concepts and the series is the anime's concepts and the anime's ideologies are more in tune with Christianity, but they still connect with Islam really well. आज मैं जिस एनिमे की बात करने जा रहा हूँ दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर मेनी ऑफ अस। और मुझे पता नहीं क्यों बट फील होता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इन जैसी चीज़ों पर बात बहुत कम होती है। वीडियो एसेस हो गए, इन जैसे मौजूआत पर बहुत कम बात होती है। और आज मैंने फील किया कि हालांकि ये मेरा फील नहीं है, आई शुड टॉक अबाउट दिस, क्योंकि मुझे दिल से चाहत हुई, क्योंकि मैंने इस स्पेसिफिक हिस्से पर इस सीरीज़ के इंग्लिश जो सेक्टर्स हैं ऑफ द इंटरनेट और जो पाकिस्तानी और जो इंडियन सेक्टर्स हैं, जो एशियन साउथ ईस्ट एशियन सेक्टर है, उसमें मैंने ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक बिल्कुल भी कोई भी वीडियो नहीं देखी। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट ए वेरी अमेजिंग सीरीज। इस सीरीज में एक सीन होता है जहाँ पर एक प्रिंस मौजूद होता है। वो प्रिंस एक प्रीस्ट के साथ बैठा होता है, फादर जिसे कहा जाता है। वो प्रिंस पूछता है उस फादर से कि आपको पता है मेरे बारे में, समझ ले एक दोस्त है उसका या एक बड़ा भाई है। उसके बड़े भाई ने, उस प्रिंस के बड़े भाई ने अपनी जान देकर प्रिंस को बचाया और प्रिंस के लिए वो आखिर तक अच्छे ख्यालात में, वो आखिर तक अपने, वो जो प्रिंस था उसकी फिक्र में चला गया। तो प्रिंस उस प्रीस्ट के साथ बैठा होता है और अभी अभी वो बड़ा भाई मर चुका होता है, वो अभी भी जंग की वो सीन में बैठे हैं। तो वो प्रिंस जो है प्रीस्ट से पूछता है कि was the love that my brother held for me true? ब्रदर बेसिकली यहाँ पर उस कैरेक्टर का नाम है, पर मैं नाम नहीं लेना चाहता ताकि आप सबको पता ना चले मैं किस सीरीज की बात कर रहा हूँ, मैं आखिर में बताऊंगा। सो वो पूछता है was the love I held for, was the love that my brother held for me true love? वो फादर कहता है no, that wasn't true love। मतलब कि ये जो मेरा भाई था जिसने अपनी जान मेरे लिए दी, क्या इसकी जो मेरे लिए मोहब्बत थी वो सच्ची मोहब्बत थी? क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़की की मोहब्बत की बात नहीं हो रही, क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअलिटी, लस्ट और ये चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पर अमीर और गरीब की भी बात नहीं हो रही, क्योंकि अमीर और गरीब में फिर आप फाइनेंशियल गेन की बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक भाई और दूसरे भाई की है, जहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। तो पूछता है कि अगर ये जो मेरा भाई था जिसके लिए कोई फायदा नहीं था अपनी जान देने में, और वो फिर भी अपनी जान छोड़कर मेरे लिए अपनी जान दे गया, क्या ये शख्स असली मोहब्बत करता था? तो फादर कहता है नहीं, उसकी जो मोहब्बत थी वो असली नहीं थी। वो फादर कहता है तुम इस जंग के हालात को देखो, तुम्हारे भाई ने इतने इतने लोगों को मारा ताकि तुम्हारी जान बच सके। इसका मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ दुनिया पर बुरा असर किया। वो कहता है कि उस तरफ देखो, वो प्रिंस को कहता है वो फादर के उस तरफ देखो, उधर वो जो डेड बॉडी पड़ी है वो सबसे बेहतरीन लव करता है, वो जो डेड बॉडी है वो सबसे बेहतरीन लव करती है। ये डेड बॉडी जिस वक्त ये शख्स मर गया, जिस वक्त जिस स्पेसिफिक टाइम पे ये शख्स मर गया, उस वक्त ये हम सबसे ज्यादा खूबसूरत बन गया। क्योंकि जब तक हम जिंदा होते हैं हम तंग करेंगे, हम जुल्म करेंगे, हम ज्यादती करेंगे, हम लोगों के घरों पर हमले करेंगे, हम लोगों की जानें लेंगे, हम अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी मोहब्बतों के लिए जान लेंगे, देंगे और क्या कुछ नहीं करेंगे। ये जो शख्स है ये अभी दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं लेके आएगा,
ये सिर्फ दुनिया को देगा, ये दुनिया से कुछ लेगा नहीं, ये दुनिया में नेगेटिविटी, बुरी चीजें ये नहीं स्प्रेड करेगा, ये सिर्फ दुनिया को देगा। ये अपनी बॉडी की मदद से इस दुनिया को, इस अर्थ को, इस जमीन को खाना देगा, यहाँ के जो जानवर हैं उनको भी खाना देगा। ये यहाँ पर रहेगा और ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा इस जमीन के लिए, लोगों के लिए, जानवरों के लिए, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन लव है, ये सबसे बेहतरीन मोहब्बत है। और ये जो मोहब्बत करते हैं उससे बेहतरीन मोहब्बत कोई नहीं करता। यहाँ पर उस कैरेक्टर जो प्रिंस था, उसका एक लाइफ चेंजिंग चेंज ऑफ हार्ट होता है, और वहाँ पर वो जो प्रिंस था वो पूरी तरीके से बदल जाता है। He changes entirely from a prince to a king। वो जो प्रिंस था वो एक बादशाह बन जाता है। From a boy to a man, एक लड़के से एक मर्द में बदल जाता है। That is the story of Prince Canute from the story of none other than Vinland Saga। Vinland Saga is one of my favorite। I know बहुत सारे लोग कहेंगे कि बड़ा टिपिकल किस्म का एक जवाब है, but I've seen a lot of scene in anime in my life। I've read Berserk। I know it's a bit too dark for my age, but I've read Berserk। I've also read Vagabond। Vagabond is also amazing, one of my favorites, but because there wasn't an anime for a long time, मुझे पता नहीं था कि what's in it, but I knew of the story। Vagabond पर भी I'll talk someday। Vinland Saga is also one of my favorites, and I've also seen animes like, you know, many other ones like Monster। I've seen other scene in anime as well। I've the Kingdom anime, I forgot the name exactly, but I think it's named Kingdom or something like that। I've read a lot of these, and I've watched a lot of these, but none of them feel as close to me as that story does। Love and Vinland Saga, it is the title of this video, जो कि मेरे ज़हन में हमेशा से वो stuck हुआ from the moment I heard the priest। That day I had a epiphany of myself। I understood कि जो मैं चाहता हूँ वो हमेशा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि as a human being who is living, we cannot truly love। हम इंसान जब से पैदा होते हैं हम सेल्फिश हैं, क्योंकि हम कभी कोई मरता है हम खफा नहीं होते कि वो इंसान मरा है, हम खफा होते हैं कि उस इंसान के साथ जो मेमोरीज, जो ख्वाहिशात, जो स्टोरीज, जो सब कुछ मैंने शेयर किया, वो इंसान अब मेरे साथ नहीं है। मतलब मैं वो कहानियाँ, वो वक्त शेयर नहीं कर पाऊंगा। वो इंसान जो मुझे वक्त देता था वो वक्त मैं इससे ले नहीं पाऊंगा दोबारा। That is what I feel about love। That is what I feel about Vinland Saga। Vinland Saga is an amazing story in the fact that it can resonate deeply within us। मैं अगर आपको खुद बताऊं अपने आप के बारे में, I felt very single minded until recently। मतलब ये 2 साल जो गुजरे, especially in Islamabad, living in Islamabad, I kind of had this self-awareness grow inside of me। Before this I felt like, you know, एक child जिसको पता नहीं था कि उसके actions के कोई they had some value, but then suddenly one day I felt this awareness grow। The other day I was watching, I don't usually read my own comments, but I was watching my Instagram comments, and in the section there was someone that said, bro is getting old। That made me feel and reminisce on things। So I felt like this sense of unawareness in me that I had not recently understood, I finally understood it। And Vinland Saga was one of the reasons why I feel like I am understanding myself better। It's also just that sometimes in life we do things that hold no meaning। We kill, we not really nowadays, हम आजकल तो नहीं मारते लोगों को, but we used to kill, we used to butcher, we used to do that, but for what? और आजकल का ज़माना भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है उस ज़माने से, क्योंकि we still do all of those bad things and we do it for no reason in particular। And I feel like that's just that। There's nothing to do with it। We can start by ourselves। Vinland is not a place। जिस तरह आपने विनलैंड सागा के आखिर में भी देखा, one of my favorite characters, Einar, I thought he would live forever with I forgot his name, Thorfinn।
But no, he died. And that's what I love about Vinland Saga and the creator of Vinland Saga and his writing in specific. It is so human. जब भी हमें लगता है कि ये कोई वो नोबल कहानियां हैं जिसमें वो विनलैंड ढूंढेंगे, जिसमें वो एक पीसफुल लैंड ढूंढेंगे जहां पर कोई जंग नहीं होगी, जहां पर कोई ब्लडशेड नहीं होगा, स्लेवरी और वॉर नहीं होगी, इट पुट्स अस राइट बैक वेयर वी वर डे वन. वो विनलैंड को छोड़ते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट विनलैंड, just like how in the Marvel universe they say that Asgard is not a place, it's about the people. They understand that Vinland, this place, does not matter. It's the people that matter. If we can change the whole world with this philosophy, maybe one day the whole world will turn into Vinland. That day I understood that Vinland is within us. Vinland हमारे अंदर है और हमारे आसपास है. बस सिर्फ इस बात की दूरी है कि हम समझें, हम देखें और हम अंडरस्टैंड करें दैट विनलैंड सागा इज एवरीवेयर हैपनिंग अराउंड अस. बिकॉज हम सब लोग कहीं ना कहीं थॉरफिन के कैरेक्टर के साथ, किसी और कैरेक्टर के साथ, वी कनेक्ट विद इट बिकॉज वी आर ऑल गोइंग थ्रू द सिमिलर इश्यूज. हम सब चाहते हैं कि दूसरा इंसान हमारे साथ गुस्से से पेश ना आए, हमारे साथ मोहब्बत से पेश आए, कि हम एक सोसाइटी बनाएं जिसमें हम मोहब्बत से बात करें और हम मोहब्बत से रहें. बट जब हम खुद किसी और के साथ झगड़े में जाते हैं, हम खुद उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं. क्यों? हम भूल जाते हैं कि वही इंसान जो थोड़ी देर पहले चाह रहा था कि वो एक लैंड जिस तरह विनलैंड, वहां पर जाए, वहां पर वो रिलैक्स करे, ही नॉट विनलैंड बट आई वुड से ही अटेन्स पीस, अटेन्स zen. वही इंसान क्यों वापस उसी गंदे और बुरे तरीकों पर लौट आता है? क्योंकि वी डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ विनलैंड इटसेल्फ. विनलैंड इसके बारे में नहीं है कि विनलैंड इज अ प्लेस. नहीं, विनलैंड इज अबाउट यू एंड मी. विनलैंड इज अबाउट हाउ वी आर as human beings, who we are as human beings, and that's what's beautiful about it. That's what's brilliant about it. You can find the Vinland in yourself and maybe hope that others follow, creating a Vinland around you without even needing to go anywhere. That is the story of love and my relationship with Vinland Saga. Thank you so much for watching. Have an amazing evening. Find peace. Find amazing things in life. And more than anything, build your own Vinland Saga. Build your own Vinland, not Vinland Saga. Don't go on a journey of regret and sorrow and revenge like Thorfinn did in the first few chapters. No, move forward. Forget all of those things. Be different. Be like maybe Thorfinn could have been. And you know what's the best part? Most of the story of history that Vinland Saga copies, it's actually real. Thorfinn, Karlsefni, Thor killed the Tall, Canute, Prince Harald, all of these were real figures. But what the creator of Vinland Saga did in specific, he did it so that कि जो गैप्स थे हिस्ट्री के अंदर, जो कहानियों में गैप्स थे, उसको उसने फिल इन किया विद कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज ऑफ हिज ओन एंड मेड इट ब्रिलियंट. अगर आप, इफ यू कंटिन्यू गोइंग ऑन द लैंड एंड कंटिन्यू गोइंग ऑन द पाथ ऑफ रिवेंज एंड रिग्रेट एंड सॉरोज, you may just end up like Askeladd. If you don't, you might just end up in Vinland for yourself. Thank you so much for watching and love.